बाकी चीजें काम करती और फिर एक और हफ्ता मैं नहीं आया। पूरी वीक क्या हो गया? पेशेंट किसी ने धमकाया? रात भर सोता नहीं है? मेरा Hey guys, listen. Now we are into the chapter called humidity. Humidity only. First sign. लड़की से क्या चाहिए? Boy will never improve. अरे sir, मेरा sign हो गया इसके लिए. How many have really had a very good Deepavali? Sir. क्या किया भाई? Sir, I had my mom making parat. What is that? Marathi. Parat, sweets. And what else? New dresses. Yeah, but did we have a rain on that day? No, I don't think so. Yes, sir. गाँव में तो थी. But crackers were all enjoyed. No. Sir, I enjoyed the last 2 days. On the second day of Diwali, I broke my leg. I asked to break the crackers, not your leg. Now it's better. Humidity we have to start. Humidity has to start. Sir, कोई not choose. Hey guys, listen. I'm putting some good lectures for in other branches, so that I'm giving you. So we will doing events. Yes, sir. No, sir. Relax. उसीलिए मैं पहला 5 मिनट तो I know that you are all come out of a break. Is humidity started? Not started. Not started. Insulation की. सर ये इसके भरोसे बोला सर मैं ये बोला हो क्या हो गया. ठीक है. Shall I write insulation then? Yeah, but I remember insulation I completed. Yes, sir. ये भी हो जाए. Insulation से क्वेश्चन आंसर भी लिख लिया. अच्छा. So why are you going behind? Next to insulation is what? Local winds we have. सर वो भी हो जाएगा. वो भी हो जाएगा. Today there is a beginning of the class. सर हो जाए सर. You are right. Humidity have to start then. Then I remember land and sea breeze, summer monsoon. सर से ब्लू तक हुआ है. बाकी के. Sir, we have to do cyclone. एक काम करता हूँ. I'll start with humidity. Okay. Who is absent? Everyone is present today. Sir, Pratyush is I'm going to do one thing. The next lecture we will see what is left out. Okay. So write down the heading as humidity. So we will start with meaning. Then we will say what is absolute and relative. Absolute. Sorry. Good. Yeah. Relative. And then I think factors. Factors. Measurement of humidity and then form or condensation. Is it measurement? Hey guys, in school exams, did they tell you that coming will be a some schools are directly going only for the annual exam, है ना? And some schools are purposely they are putting December, I think. Yes, sir. December. Yes, sir. अरे second unit test or second semester. So did your school also announce December you are going Yes, for? sir. Yes, sir. Did they tell how many chapters? Yes, sir. How many? 3 or 4. But are we in a comfortable position? Yes, Very ahead. Sir, in our school we are little bit behind. What is that? Little bit behind. मतलब which chapter they are doing? Pollution. So, हाँ. humidity भी आता है. Sources of pollution. देखो एक काम करते हैं फिर. Which days of the week you are not having any lectures? Wednesday you are having any lectures? Yes, sir. We are having. Foundation and Hindi. No lectures. No lecture. No, नहीं है. English है. Yeah, but listen. Every lecture of your week starts with 6:30. Friday and there or not, I'll check it. तो एक काम करता हूँ. जिस दिन आपका lecture नहीं है ना, उस दिन I'll keep one lecture only for 2 hours, so that you come, sit and run away. है ना? अभी वैसे कोई plan नहीं है because every day even I am having lectures in other branches. जल्दी रख सकते हो सर फिर. But 4:30 होगा क्या? मैं नहीं हो रहा sir. Not all the schools are 4:30. और खेती.
रुक जा. Hey, what time you guys come out from हमें this? दूर हम दूर We come at our home at We come we reach our home at 3:30. 3:30. I come at 4. At 5 o'clock. 5. Five. Sir, not comfortable. Comfortable नहीं. Sir, So I come home at 4:15 or So 5:30. So I come home at 4:15 or Sir, 4:30. He wants to sleep and enjoy. बोला ऐसे ही करते हम लोग. So Friday, what I will do, I will talk to the department. 5. Try to bring it by 5 o'clock. And 5 to 7 we'll have only one, if possible, because even I have my lectures in other branches at Friday. I haven't seen my timetable is there. क्या हो जाएगा ना? I just don't want to keep you guys that pending December वाला, because my target is to finish by November middle. सर हमारा दिसंबर अपना जो आने वाला सर पोर्शन खत्म हो गया, ह्यूमिडिटी बाकी है. But फिर annual का भी तो बचा है. Sunday, what time you guys are not having any class? Session tested. What time to what time? 10 to 12:30. हाँ तो ठीक है. Sunday preferable, because last Sunday I सुबह was. मत रखो शाम को. Please sir, already हम लोग हर संडे उठते हैं सर 7:30. कोई नहीं, हम लोग फाउंडेशन पे ऑलरेडी 7:30 मैं रखूँगा 10:30 ठीक है. सर 10 o'clock तक ना टेस्ट में होगा. पागल हो गया. This will not be disturbed. छोड़ दो अभी, या तो फ्राइडे या तो फिर संडे में देखता हूँ कैसा टाइमिंग है. Write down below humidity. It refers to. सर कल भी हमें थी. इधर नहीं है. नहीं है. ठीक है मैं देखता हूँ, मेरे टाइम टेबल देखता हूँ. It refers to. Write down. Humidity refers to. Humidity. Amount of water vapor. Refers to amount of water vapor or moisture present in the atmosphere. Amount of water vapor or moisture present in the atmosphere. Full stop. Its presence. Next point. In gaseous state. Helps in gaseous state helps in several climatic phenomena. I can drop your pens and let me just explain what are you observing this. So don't confuse when I'm saying the word chill. What is that word chill? Chill. सर जब वो वाटर वेपर्स आते हैं ठीक कोई है, भी हाँ. ठंडी हो water वो हम लोग फिर when you and me go to a sea area, we feel that chillness. That is breeze. है ना, वो breeze है. But ये क्या है? Humidity है. देखो, what is evaporation and what is condensation? I don't need to explain to you. Everybody knows. yes Is evaporation and condensation taking place every day? yes sir And evaporation during daytime, condensation during night time. But what is this moisture which are they? So are they visible? no sir Suspended है. And they are in the form of gas. And gaseous state में रहता है. And you know, every day sun beating the earth, beating with its rays only, nothing else. The water is converted into water vapor. मुझे याद है पहला साइंस टीचर जो मेरा लाइफ में आई थी, उसने ऐसे ही बोला, you want to see water vapor? Very good. You want to see? The next time you make tea at your home, मतलब मैंने मेरा मामा keep a lid over it, है ना? And then after some time keep the lid down, then automatically you see droplets of water. वही है. वो तो condensation हो रहा है करके दिख रहा है. If not, can you and me see? So what is this role? I have written the word. It has its own role in climatic process. What exactly you feel? Even the dust, even the smog, and even the fog, in the absence of moisture, will it form or will it not form? It will not form. Moisture is so important.
It's like a boy of 9th or a girl of a 9th standard is challenging the teacher. इस रूम में भर के है, but वो दिखता नहीं है. मैंने बोला क्या है? नहीं तो. And without which you cannot live also. Only live Oxygen. Oxygen, madam. इतना तो science teacher को मालूम नहीं चला. हाँ ठीक है बैठ जा. And then the chemistry teacher comes in, and every boy and a girl wants to check the acid. है ना? The most dangerous acid. And I cannot forget my chemistry teacher, threatening us. ये है H2SO4, है ना? फिर लिखती है HCl. क्या है ये full form इसका? Hydrochloric Hydrochloric acid. acid. Hydrochloric acid. Sulfuric acid. And very quickly, boy like you might stand up. Madam, is it very reactive? हाथ डाल के निकले. नहीं नहीं वैसे नहीं. Definitely, no, I don't think so. क्यों? No, every day we torture you, madam. Every day, you never get out of the classroom. But, तो मैम बोलते हैं इसलिए that acid also will not react to you. मैम बोलते हैं तू मेरा इतना फैसिलिटी कर रहा है. If I throw that acid, definitely. मतलब कैसे आप भी get out बोलो, मैं भाग जाऊँ. I am very sensitive. You know the word sensitive? Yes. अंदर खींचने के लिए कोई नहीं आएगा, बस आप एक बार बोलो कि तेरा शक्ल मत दिखा, मैं नहीं आऊँ. फिर प्रिंसिपल ने मुझे क्यों नहीं आ रहा? You go and check with geography teacher. उसे नहीं बोला, है ना? But for any good thing नहीं बोलता है, but मेरा कान तक नहीं पहुँचता है. So here humidity is like that only. It is there in the atmosphere. For you and me, छोड़ो ना सर, रात का 9 बजे क्या सीरियल देख के खाना खाते हैं. Is it that? Yeah, definitely हम तो वही करते हैं. Next दिन सुबह 7:30 जाना है सर. है ना? 6:30. Then I remember phases of the moon. My geography teacher asked me to draw 15 days. पहला वो न्यू मून से कैसा आता, एक दिन देखा, 2 दिन देखा, तीसरा दिन पापा को नोटबुक दे दिया, आप सोने से पहले ना आज मून कैसा दिखता ड्रॉ करो मेरा नोटबुक. पापा ने किसका ऐसा दिखा? हमारा ये तेरा क्या पापा, हमारा तेरा सब अपना ही है. Papa also tired of the 6th day. He draw the 7th day full moon and दे दिया. और मैं भी जाके मैम को दे दिया. ये लो. मैं बोला इधर 10 दिन में मून इतना बढ़ गया, वो मुझे मालूम नहीं, पापा ने बढ़ाया रहेगा. मैं तो क्योंकि the first day moon was like this, the second day moon was something like this, the third day moon was like this, and the fourth day the moon was full. मेरा पापा इंजीनियर है ना, वो कुछ भी कर सकता है. यहाँ से मून को यहाँ तक सिर्फ 4 दिन में बड़ा कर दिया. सर उसने कॉम्प्रेहेंड. Because you never know what you guys are doing. So when I teach humidity, people tell me, sir, ये छोटा सा चैप्टर क्या इम्पोर्टेंट है सर? वैसे तो मैं तो बोलता हूँ पूरा ज्योग्राफी भी इम्पोर्टेंट है. वेरी गुड सर, आज आपने वेरी गुड. इतना दिन से मैं आपके मुंह से यही बात सुनने के लिए वेट कर रहा था. आप कभी बोलता नहीं है. बोला हाँ, क्यों नहीं बोलेगा? अरे मेरा रोज ही रोटी है. ठीक है ना सर. So what does it mean? Humidity for you and me is क्या है sir? रहने दो ना, क्या पता. देखो, if the neighbor house is catching a fire, you are not even reacting. मम्मी तो बेटा उठ. क्या हो गया? Neighbor का घर fire चल रहा है. कौन है? Sir, इसका volume. अच्छा इधर ही I'll give it back to you. But if that same fire comes to your house, मम्मी से क्या? और तुमने बोला भी नहीं. मतलब it is going to come and prick me. How many of you have seen anybody, slippery on the banana peel and fell down? Everyone will laugh. है ना? And then sir लगा क्या किधर भी? हाँ, नहीं ठीक है. But you fall on the same. कोई help करने नहीं आता. है ना? You see nowadays we are seeing India which is more of feminine oriented. And हमारा प्राइम मिनिस्टर भी वही चाहता है, बेटी पढ़ो, बेटी आगे बढ़ो. अरे बेटा वो भी अपना पीछे चाहता है ना. फिर उनका एक ही वर्ड आता है, मित्रों. हाँ ठीक है भाई और बहनों. एंड तो क्या सर, हमारे लिए तो कुछ प्रोग्राम लोग सब कुछ लड़कियों के लिए लाए. चुपचाप बैठना, वो आगे बढ़ेगी तो मैं भी है. लड़की बहन योजना सर. हाँ, महाराष्ट्र का. I think they have closed down लड़की बहन. वो फाइनेंस के लिए. बेबी का ही हालत खराब है. हाँ सर, बट भाई का भी निकाले पेटिशन. कोई देता ही नहीं भाई. भाई आ जाओ मुझे भेज के. So here I will tell you, tomorrow you study humidity and today you forget. सर आप उल्टा बोल रहे हैं. Today you study
tomorrow we forget, है ना? सर अब tomorrow तक क्यों वेट करा? आप अरे जैसे ही ब्रेक में निकलेगा अंदर what is humidity? क्या है? और कुछ बड़बड़ कर रहा है। और तेरा दिमाग उधर ही था और याद रखना ऐसा जरूरी नहीं बोला सर। और जो याद रखने बोला वो तो भूल जाने का क्या फर्क पड़ता है? I remember my ICSE that Sanpada batch you and friends. So मैथ्स ना बहुत सॉलिड है सर, बहुत सॉलिड है। बोले ज्योग्राफी उससे भी है सर, उससे भी है। इकोनॉमिक्स वो तो पूछो ही मत। सर क्या है? मैं बोला फिर बाकी कौन सा सब्जेक्ट? सर एक ईवीएस करके है सर, वो अभी तक आया नहीं सर। ईवीएस सब्जेक्ट ओनली दे लाइक इट। बोले क्यों? सर थोड़ा डिफिकल्ट है बट मैं कर लूंगा सर। ईवीएस तो डिफिकल्ट है। हाँ सर आपके लिए बट मेरे लिए ठीक है सर। मतलब despite EVS all subjects are difficult for them. उधर तो उधर I think somebody have told स्कूल में भी भाई साहब का वो है ना वो लड़का इसका और उधर यूटी में भी उस दिन he was गायब for more than half an hour. हाँ कराटे हाँ कश्यप वाले थे? हाँ वो तो तो मैंने बोलते हमें कॉलेज के पीरियड में भाग गया था फिर आया सर ने पकड़ा वो बोल अच्छा बोला हाँ बता दो मेरा पीरियड खत्म हो गया था फिर बीच में गैप था तो मैंने बोला इसको पकड़ उधर स्कूल में मेरा और तो उधर भी मॉल जैसा है ना हाँ हमारे पास ऐसा है ना तो हम सब साथ में पकड़ा गया ऐसे मतलब हम सब साथ में प्रैक्टिस सब एक ही क्लास में ठीक चल अभी नहीं करेगा तो कब करेगा है ना then I move away from the word humidity then I teach them the word absolute and relative ये relative मुझे बहुत पसंद है it's like your mother relative में मेरा माँ क्या करेगी मैं कितना भी बेस्ट मार्क्स लेकर आके हाथ में रिपोर्ट कार्ड या पेपर देगा ना मम्मी बोलेगी उससे सारी लड़का है ना वो बाजू वाला बाजू हाँ कंपैरिजन वो सामने वाली जो बच्ची है वो बहुत अच्छा बढ़ती है ये लड़का फ्रस्ट्रेट होके बोलता है उसी को लेकर आई इधर मैं चाहे तो उधर चली जाऊँ है ना तो रिलेटिव मींस आई ऑलवेज यूज द वर्ड इट इज कंपैरेटिव और एब्सोल्यूट में हमारे बॉयज आ जाता है जितना भी मिला मेहनत से मेरा है सर मैं कितना मिला 2 मंथ मिला है दो सी मिला उसे भी मतलब क्या एब्सोल्यूट है सर मैं आत्मनिर्भर हूँ अरे वो कह रहा आत्मनिर्भर किसी से कॉपी नहीं मुझे तो दे तो रहा था पीछे वाला मैंने नहीं फेल हो मैं तो भी अपने और दूसरा बोलता नहीं सर 2 मार्क्स का इधर से लिया 4 मार्क्स उधर लिया हो गया सर पास हो so the word absolute means the humidity I say what it is carrying at present okay what it is if I use the word what it is you will understand whereas comparative में मैं 2 वर्ड डालता हूँ how much it can carry what that is wind and what it is carry ये भी आपके पेरेंट्स बिल्कुल बोलते हैं मेरा लड़का बहुत इंटेलिजेंट था सर आपको मालूम नहीं 99% लाता था मतलब कब फर्स्ट टाइम फिर सेकंड में फिर 80 आया सर थर्ड में फिर 60 70 में आया सर फिर फोर्थ में जैसे जैसे पोर्शन बढ़ रहा है उसका परसेंटेज कम हो रहा है बस अभी ऐसा क्यों कर रहा है मैडम वो पोर्शन नहीं सर ऐसा नहीं वो लड़के की वजह से ये खराब वो ब्रिलियंट है बट ये जाके घर पे रिपोर्ट दिया रहेगा अरे वो ना मेरे से कम मार्क्स मम्मी थोड़ी उसका मार्क्स देखने वाली so we always believe the word how much it can carry है ना in minus what it is carrying so that just one what it is carrying so what I will do I am finding out a humidity which is called as relative and what is absolute अभी हवा में humidity कितना है you say 60% absolute and what is comparative it can carry 80% at present it is carrying only 40% so what is the difference 40% difference है उसमें so which humidity is responsible for studying climate absolute or relative always relative है ना because I want to know why Mumbai has become chilled nowadays sir rainfall भी तो है नहीं now the winter is already settled I have seen I think after 4 only you can see sunrise नहीं सर sunset अभी तो बारिश होगी 5 o'clock या 5:30 फिर से rainfall भी आ जाता है sir so the winter starting in our country already but rainfall को एक ही जाने का मन ही नहीं हर 2 दिन में बीच में दिखाता है कि मैं इधर ही है ना so we always believe for studying the climate which humidity is mainly important then as a measurement we use a meter which is called as hygrometer ये बच्चा बोलता है ये कौन सा नया मीटर है तो हम इसको सिंपल बोलते हैं इट इज ड्राई एंड
हाँ एनीबडी वेट बल्ब थर्मोमीटर आपके उधर बुक में है एंड उसमें से हम लोग करेंगे देन ये यूनिक अच्छा तेरा डाउट है ना ओके सर जो हीटिंग स्टेशन जाते हैं फिर वो ह्यूमिडिटी क्या होता है फॉग होता है दैट इज फॉग that is वो कुछ कैरी नहीं करता करता है ना उसमें भी तो है रुक जा आएगा भी मैंने से कंडेंसेशन पीपल टोल्ड मी ऑपोजिट ऑफ इवेपोरेशन है ना यस सर एंड व्हाट इज इवेपोरेशन ऑपोजिट ऑफ कंडेंसेशन लीनियर इक्वेशन में हम लोग यही बोला a square is equal to b square is equal to c square क्या फर्क पड़ता है ना I still remember word problems was a trouble for me I hope it is something my father's age is double the age of me 2x plus x plus after 10 years I will be 20 what is my father अरे छोड़ना यार 2 नहीं होगा 20 होगा and हमारा मैथ्स टीचर let the father's age be x हमारे टीचर लेसन पे लाइव फिर 10x फिर -10x मतलब बाबा ये क्या सम फिर उसको उसके बाद का एक फिर क्वाड्रेटिक आएगा तो और भी टेंशन है सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिवाइड करना मतलब सर मिडिल इक्वेशन को दो डिवाइड करो फिर इधर माइनस ये क्या सर नेक्स्ट डे आई गॉन टू द सब्जी वाला टू बाय सम सब्जी एंड आई वाज आस्किंग ए भैया चल क्वाड्रेटिक बता बोला वो कौन सा सब्जी है भाई मैथ्स का इंपॉर्टेंट है मेरा मैथ्स टीचर बोला सब्जी वाले से सब्जी ले लेगा तो क्वाड्रेटिक सीख के जा चलो क्वाड्रेटिक तो फिर भी हम लोग ने 9th और 10th में किया था बट आई रिमेंबर ट्रिग्नोमेट्री वाज अ रियल चैलेंज फॉर मी आया आपको हां साइन कोसेक tan जब आइडेंटिटीज यानी एक्सपेंशन है ना नाउ आई अंडरस्टैंड मैं थोड़ा बहुत पढ़ाता हूं तो मुझे थोड़ा याद रहे ड्यूरिंग माय स्कूल डेज इट वाज अ रियल ट्रबल तो मेरा मैम ने बोला बाथरूम टॉयलेट सब्जेक्ट में लिख कर दो उस दिन पापा के बोले ये मिरर में कुछ लिखा है ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आप भी पढ़ो मैं क्यों पढ़ लो ना फ्री में तो है है ना Then I asked my maths teacher, madam, ये trigonometry life में, if you want to become a navy officer, नहीं बनना. If you want to become an engineer, नहीं करूँगा. If you want to become a mathematician, वो तो नहीं करना है. Why do you teach madam all this? हाँ? हमको लाइफ में चार ही चीज चाहिए मैथ्स में, okay? Addition, subtraction, multiplication, division. है ना? उसके आगे कुछ, हाँ उसके आगे लाइफ में क्या है सर? वो multiply अलग है सर मैं बाद में बताता हूँ है ना देन देखो साइंस में ना फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में मेरा बच्चा बोलता क्या रहा है बात अच्छा है सर थोड़ा सा टॉपिक्स आता है और हमारे टीचर ने सिखाते तो हम भी बहुत इंटरेस्ट लेके सीखते सीखना भी पड़ेगा है ना देखो केमिस्ट्री का बैलेंस इक्वेशन अभी तक मेरा लड़का बैलेंस इक्वेशन नहीं सीखा और मैंने बोला उसको आगे 2 डालने का फिर h में 2 डालने का इधर 4 डालने का हर जगह वो 2 डाल देता है इधर भी LHS में भी डाल दिया RH बैलेंस नहीं आपको भी नहीं आता क्या सर करके दिखाओ सर मतलब बैलेंस बेटा ऐसा करने का सर लाइफ में बैलेंस नहीं है आप क्या इक्वेशन में बैलेंस क्यों रो रहा क्यों है because I'm covering all the subject with geography है ना then सिर्फ एक ही सब्जेक्ट मुझे नहीं आता मराठी because मराठी is not my cup of tea and संस्कृत थोड़ा बहुत सीखा है तो थोड़ा बहुत से काम होगा so we believe only one thing any subject which comes to my real life no subject PT is the only subject. Yes sir, real subject that we have studied. Hard studies sir. And I remember working there in that people come and text me with sir आपने 2 हफ्ते के बाद एक PT दिया सर क्यों सर आप देवता है मतलब अभी फिजिक्स का लेक्चर नहीं ऐसा नहीं मैं जा रहा हूँ सर जा रहा हूँ 12th standard science people so we always believe when I'm going for condensation I will be going a very close topic types of clouds है ना clouds का एक छोटा सा वीडियो है cirrus cumulus and वो कुछ है बस उतना ही करना है सर वो टकरा के निकाल दो ठीक है not hurt you ना anyway already तो थोड़ा so we believe this chapter is very short very sweet but at the same time some technical things are remembered so let us go into your volume only directly start the para from this page number 167 and you read from the first line Vapor is a gaseous state of water. A certain amount of energy is required to change water into water vapor. Heating of water over oceans, lakes and rivers causes the water to evaporate. Generally 600 calories of heat is required to heat. I'm trying about 600 calories. 1 gram of liquid water into ये आप लोग ने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है Yes sir. आपको आया अगले साल बस अभी नहीं है नहीं हाँ बट वैल्यू सीखा है ना बट कॉन्सेप्ट सब समझ में नहीं मोल कॉन्सेप्ट नहीं हमने तो पढ़ा है more concept पता है हम फाउंडेशन में थे ना इस फाउंडेशन अच्छा
चलो 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 जल्दी करो. Heat loss occurs during evaporation. The heat passes into water vapor in a hidden form. It is known as latent heat. Underline that word, hidden form. Hey, there is one word called ignition temperature. Anybody knows what is ignition? जहाँ से वो ignite होता है fire. Very good, very good. What is that? Fire कहाँ से होता है? Stove से होता है. जो एक certain temperature. The lowest temperature at which a substance catches fire. I remember during my school days in ICSE they had asked, why do you put kerosene into a stove? Why not petrol? तो लड़का नीचे आंसर लिखा है, सर बहुत महंगा है पेट्रोल. Sir, the ignition temperature of kerosene is less than petrol. He is correct only. Kerosene 10 रुपए या 20 रुपए में आता है, वो बचा 60 रुपए में आता है. But science answer no बेटा. नहीं सच में मैडम कॉस्टली है, आप चेक करो क्या? No बेटा. अरे सच है मैडम. केरोसिन राशन दुकान में मिलता है और पेट्रोल पंप जाना पड़ता है. और पेट्रोल पंप वाले किधर बनना है? अब स्टोव में बनना है. किधर स्टोव? घर में. And he doesn't give you unless and until that vehicle is shown, because you can use it for mass violation. हाँ sir, वो भी tension है. देखो this kerosene is not evaporated in the air when it is open, but petrol does it. Petrol से भी ज़्यादा the aeroplane fuel, you know how dangerous it is. No, not Jet fuel. fuel. Fuel बोलते हैं. So how dangerous it is. So इसलिए foreign countries में they say their cars run on gasoline. Gasoline, gas जैसे ये liquid ही है, but it is much cheaper than petrol or diesel. यो टैंक में. हाँ, I know भर के जाते हैं. $20 या $25 देना पूरा कार का 1500 लीटर का वो भर के दे. अगर मैं इधर $20 देगा बोले आधा लीटर भरा है, बाकी का पैसा सब देगा. है ना? So we believe that this ignition temperature is very important. It's okay. Take it. Why should I? Read. You are only throwing and saying pen. When condensation occurs, this latent heat is released back into atmosphere, causing a slight raise in temperature. Underline that word. Slight rise in temperature. क्या हो रहा है? Behind girl, please read. She's in a looping mood today. क्या हो गया? Read. That is why during the rainy season, workers will be done. देखो. आपको उल्टा पहला 2-3 दिन रेन में अगर सडन हीट आता है, because that earth has been parched for 4 to 6 months, है ना? जब मैं उसमें पानी डालूंगा, that evaporation type things happen. So it is for 2-3 days it is hot, but after that it becomes chill. पानी डालते हैं. Go ahead. In low latitudes, owing to relatively higher temperature, evaporation is present. However, equatorial regions, the sky often remains overcast with clouds and evaporation is relatively low. In tropical deserts surrounded by seas, evaporation is maximum because of high temperatures and clear skies. Factors favoring evaporation. Okay. Humidity. Dry air promotes greater evaporation. This is because dry air has more capacity to hold water than humid air. Underline that word, dry air. Why dry air can carry? Oh boy, you tell me why dry air can carry a lot of moisture. Dry air can It has more humid air. Then the wet air. Wet air मतलब already वो गीला है. फिर वो moisture कैसे carry करेगा, है ना? Whereas the air which is generally dry, it can pick lot of moisture. Simple है. तो ध्यान नहीं करता. तो यहाँ पे दो humidity दिया है. हाँ वही absolute and relative. नहीं सर, ये अलग है. ये humidity, ये humidity. हाँ ठीक है ना, वो जैसे intro रहेगा वो. ये आपकी condensation. हाँ carry on. The higher of heat, the greater the heat of the water surface and air above it, the greater the rate of evaporation. The strong winds promote evaporation. Wet floats dry more quickly on a windy day. देखो, these are 3 factors which is supporting evaporation. पहला factor क्या है? Humidity. Second factor क्या है? Supply of heat. And third factor क्या है? Wind. What is the difference between wind and air? Wind is the movement of air. Moving air is just Wind is the movement of Wind is air. moving air is just air. Wind is the movement of air and air is present in the air. सर, वो promote करता है evaporation. Simple Wind word is the है. movement of air. Air in action is known as wind. तो वही तो बोला. But ये word से समझ में आता है कि तेरा word से समझ में आता है? So wind is the movement of air. And air is the? Air is movement of air. Air is a combination. फिर एक लड़का नीचे लिखा है, sir, when you switch on the fan ना, wind. Switch off the fan. Switch off the fan, air.
But if I don't switch off the fan, bill बहुत कम आते हैं सर, है ना? So when I am saying air is in action, then it is wind. बस. Air is in action. हाँ, मतलब when it is moving. हाँ, go ahead. Girl, please. Humidity, water is added to the atmosphere by the process of evaporation. It changes from liquid to gaseous form. This water vapor in air is called humidity. Underline this water vapor in air, जो liquid से gas में convert होता है. Humidity is in भाई, बेड टाइम है. तो यहाँ क्या है? आदिवासी और जानवर की तरह होती है. नहीं, he's elephant है. He's a very calm fellow, है ना? अभी पहले से मुझसे नहीं करता ना? आज ही कोई कंप्लेंट आया रहेगा, बोलते नहीं सर. आज क्या कंप्लेंट आया? आज सो रहा था सर स्कूल में. हाँ सर, फिजिक्स से भी सो गए. क्यों रे? सर प्राउडली बोल रहे मैम को, मैम ने आपके लेक्चर सर खड़ा होकर सो गया. And what was the topic going? Yes, expected. तेरा जो भी सतरंगी है लगता है. हमको से लगता है. चलो जल्दी, we'll finish it off. humidity is inversely proportional to heat. The hotter the air, the more is the water vapor present. Underline the word. Hotter is the air, more water vapor. अभी the next person, you take on. Put number 1 for absolute, number 2 for. अभी इसका मैं comparison लिखने बोलूँगा. Will you able to write? Because exam is sure है. Distinguish between absolute and relative. I'm going to mark the points here. चलो. 1 or 2. नहीं 1 and 2 डालो, number डालो. Carry on. The amount of water vapor held by air at certain Second temperature and and volume is called absolute. Absolute humidity is the mass or weight of vapor per unit volume. Underline that word. It is mass or weight of vapor per unit volume. Usually calculated, underline, grams per cubic meter. कितना ग्राम per cubic meter है air में. Second, air rises upward, underline, absolute humidity may change. क्यों रे air जब ऊपर जाएगा तो सर वो वाटर वेपर ही ऊपर चले. evaporate हो जाएगा. तेरा जैसा साइंटिफिक दिमाग इतना गंदा आंसर है. Therefore, in weather calculation, underline, absolute humidity, underline, generally not taken. याद है मैं explanation में बोल रहा था. In exam they'll ask you which humidity is taken. It is relative. Why absolute is taken? उसका reason है. Okay. You read this. Absolute is not taken. Not taken. I am reading relative. The ratio between the absolute humidity of a given mass of air, underline, maximum amount of water vapor it can hold. Underline the word maximum. RH is equal to, उधर है उसको rectangle box में डाल दो. Actual amount it is carrying and water holding capacity. Capacity में वो कितना carry कर सकता है. And why it is multiplied by 100? सर वो percentage. Very good. Let us go to the next file. Okay. अभी ये सब मत रीड करो डायरेक्टली. डायरेक्टली वो मैं करता हूँ. डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव नोटबुक में लिखो और जो मैं मार्क कर रहा हूँ वो नोटबुक में लिख दो. It is the open bracket from there. Measure of the actual amount of water vapor. इधर आ जाओ. Water vapor in air, relative maximum then in the air can hold. देखा? Yes sir. हाँ. Expressed as grams of moisture per cubic. इधर लिखो expressed as the percentage value between absolute and given humidity. वो पूरा कट कर दो. Absolute and given. And maximum, absolute and maximum amount लिखो. And third point लिखो Absolute humidity and maximum amount of water vapor. वैसा कर दो. And third point इतना ही लिखो. Higher the amount of water vapor, higher is the absolute. इधर लिखो warm air possesses more water vapor than cold air. बस उतना ही. Then go down to the fourth one. Absolute humidity is not taken for weather calculation. समझ में आ रहा कैसे लिखने का? और absolute भी मत लिखो. It is generally not taken into account for weather calculation. It is taken into account. चलो exact वैसे लिख दो. It is taken into account.
तो टैबुलर में नहीं लिखना है ना, ऊपर नीचे लिखा चाहिए। नहीं साइड बाय साइड। तो टैबुलर मेरे पास होगा ये जो आ रहा है Because this is how you have to remember. पाउच इतना ये राइट WhatsApp पे मैसेज चुप रहे तू भाई, तू लड़ाई कर रहा है। ये ये क्यों है बस? Hey, fold the page and go writing. सर स्पेल नहीं है ना। अरे बाबा, fold the page. इसकी लाइन आती है, उसकी लाइन मार दे। तो उससे भी स्पेल चाहिए तो लाइन मार दे। Boy na, just want to while over that time. Line marna. What kind of Hindi? लाइन मार। हाँ। ये सब मुंबई में चलता है सर। हाँ, outside they don't understand. बॉम्बे साइड से आया मुझे। अरे यार Fold the page into two and write it. सर उससे मार्किंग So the first question that you are writing in the notebook is this: difference between absolute and relative humidity. Boy, Yes, sir. This is the first question expected, huh? And they'll ask you what is humidity also. That I've already given. What she says. पढ़ेगी नहीं तो तेरे पापा ने और पापा ने तो कैसे केला बोला। नहीं करेगा Still that scale issue is no right. A 10 standard geography, anybody friends are there? Try to take away their board papers, huh? Why sir? Because आपको use में आएगा। ले लिया सर उसने। सर दोस्त भी ऐसे अभी तक बोर्ड ही नहीं हुआ तो तुम ले लिया। सर दोस्त भी ऐसे कचरे में जाएगा ऐसा है? हमारे लाइब्रेरी में मिलते हैं सत्यान के बोर्ड। But you are not allowed to take the xerox, ना? हाँ हाँ, फिर ठीक। जे हम लोग तो भी लेते हैं टीचर हमारे गांव की लोग। सर जरूरत नहीं है सर ऑनलाइन मिल जाता है ठीक सर है। काउंसिल डेज में अच्छा ठीक है, मत लो बाबा, बस लिखो। मुझे आइडिया है। And by 10 you are improving like anything. वो तेरा बाजू में बैठा वो तो है ही। सुबह चुप। पता चल कैसे कर रहे थे? ठीक है। 10 के बाद मिलते हैं, है ना? 10 के बाद मिलते हैं। Sorry, because that continuous talking. Yes sir, I Throat understand. becomes very. वैसे भी बोल रहा And earlier I used to keep away this water and lot of humidity will acidity problem. Humidity problem. अभी measurement करेंगे, then we will be going into condensation. I think वो clouds का भी निकाले तो nice. वो तुम्हारा कौन सा वीडियो है? कौन सा वो आता है? डॉक्टर वन से तो भाई जोड़ो I heard some schools are sponsored by not. For making videos. यस सर Because of its एक्चुअली लाइन दिल्ली सर अच्छा, they show this only. तो उनको बोलने का कि है ना? अरे सर वो नोएडा वाले लाइन ने भी स्पॉन्सर किया है Copyrights ले लो उससे, है ना? Hey guys, finish it so that you can watch the other two videos quickly. ऑलमोस्ट डन सर मतलब अभी स्टार्ट किया है, नहीं सर सर मार्क तक क्या है ना? सर वो दर्शन से मानती है ना सर उसका वाले नया वर्किंग चाहिए ना सर अच्छा, दोनों खाली
चलो चल सामने बाद में इतने भाई पहुंचाएंगे ना ये ले लेना ऑफिस का ही ले उसी को ले ये भी ऑफिस का ही है हाँ सर ऑफिस के मैं ऑफिस आते हैं ना सो इसलिए सर फोटो निकाल के रखो ना सर इसका किसका है ये बॉटल में से पानी पीते हुए अरे लेने देना पानी फिर क्या है नहीं सर बीजू सर को भेज दो सर क्यों सर ये हर शाउट बार से ये हाँ ये शाउट से क्यों आज हिम सर सर खुद की बॉटल ले सर ने खुद की ऑर्डर दिया था इसलिए सर इसे तो 10 की बॉटल लेकर बोल रहा था कि अच्छा है देखो मैं उसको कितना चिल्लाता हूँ क्या क्या दैट इज डिफरेंट बट व्हेन आई एम इन अ गुड मूड विद हिम आई नेवर एंड दैट ही नोज आल्सो थैंक यू सर लो ना मैं इधर भी है उम्मीद ही है हाँ? उम्मीद ही है और ऐसा मेरे को कौन से निकाले फिर से कागज के मेरे फ्रेंड Done? चलो we are going into the next देखो still he is writing that is what I क्या कर रहे सर लंबा है सर कुछ नहीं है मैंने उसको शॉर्ट किया है सर टेक्स्ट में अलग पॉइंट्स से है हाँ तो मेरा वॉल्यूम ले सेम ही है नहीं अलग बड़े बड़े हाँ हमेशा तो पूरी करता है पानी भी drink in between the writing and studying how could you manage all this चुपचाप लिखो ना पानी नहीं क्या पिएगा अरे है ना इधर जैसे तो चोट है सर डू नॉट डिस्टर्ब प्लीज yes he na he has born to disturb everyone सर मैथ्स लेक्चर में इतना सीरियस है सर तो इधर मैथ्स लेक्चर which is the सर ये सर बोला 45 मिनट सर से एक 4 लेक्चर बार में 10 बार पानी तो इसका नाम लेता है सर 1 मिनट में लेक्चर में एक सम चालू है इसे इन अ टाइम ऑफ 2 मिनट्स इस तरह हम 10 बार है लेक्चर में then also he is how is the maths by the way good but maths सर का maths बिगाड़ दिया ना तेरा मैथ सर एक सम सही से नहीं करता सर सर बट अच्छे मार्क्स तो है छाती वही वही कैसे आए that is what सर is बाजू वाला सर। पीछे था हां सर तो पीछे वाला आगे वाला कोई तो रहेगा ना सर आगे भी फेलियर पीछे भी फेलियर मतलब और ये भी फेल किया। क्वेश्चन पेपर इधर-उधर करते सर भाई सर देखो पीछे मेरे फेलियर बैठा है वो बेचारा मेरे से एक बार होता है क्वेश्चन पेपर मतलब तू सबको हैंडल करते है और सर इतना मैम जानती है हम लोग सर, तो एक एक फ्रेंड पेपर भी देता है सर। इसको अच्छे में से वो दोनों फेल हो गए तो वो समझ नहीं आया सर वो फेलियर था नहीं सिर्फ बनाया पेपर दे दिया चलना किसी का तो हाथ है ना चलो let us go into the next para will not waste time सक्सेस हो गया निशान making others unsuccessful a measurement I am reading still people are writing हां we can finish this chapter in the next lecture itself What equals I'm reading please look into it सर सर the humidity at the atmosphere is measured with the help of analyte hygrometer आइसो open bracket down dry and wet belt thermometer now directly I am going to the second line a piece of wet cloth is tied around one bulb and other cloth dipped into a small container are you seeing yes Yes, sir sir. that is what this is a wet and other is a dry one the rate of evaporation of water vapor from the wet bulb unlike keeps the temperature of this bulb lower than the dry तो है ना? दोनों सेम दिखा रहे हैं बस वो वैसा पिक्चर है ना a difference in the temperature between unlike two thermometers indicates relative जो wet वाला है it will show more or less we do not know but if the temperature is like this today what we are having अपना wet cloth से भी ज्यादा वो dip रहेगा understood and look at the last line saturated air will not allow unlike evaporation and in this case temperature readings unlike on both dry and देखो इधर same है उसी level
What is he doing? TNT smuggling कर रहे हैं। Yeah, in the entire reading, he did not know that I am looking at him and reading. सर मैं देख रहा आप पढ़ रहे थे सर। Thank you. मैं पढ़ ही रहा हूँ. Underline that. In this situation, both dry and wet thermometers will be the same. This would mean relative humidity is how much percent? 100%. 100%. कब रहेगा? जब absolute and relative same रहना चाहिए. Okay. Now who will take condensation? Last boy, you read. Condensation. No. You read. Everyone be ready with the pencil. Condensation is the reverse process of evaporation. Condensation water vapor in the atmosphere gets converted into water droplets or ice. During condensation, the latent heat locked in water vapor is released back into the atmosphere. Condensation can take place only when water vapor is added to saturated air. ये तू जिंदा वाले को मारेगा या मरा वाले को और मार के चुकेगा? रीडिंग में एक वो रहना चाहिए कि मुर्दा बोलेगा भाई मैं पहले ही मर चुका है और जा और हाँ let us give it to him you read ये पूरा फ्लड लिख रहा है फू करके Condensation is the reverse process of evaporation. Everyone underline the word reverse process. In condensation, water vapor in the atmosphere gets converted into water droplets or ice. Underline water droplet or ice. When it will convert into ice? So in very low temperatures. Wait. Below 10 degrees. Peaks. Peaks and holes. पीक तो हर इसमें होता है आउटलेट पे जाएगा उससे तो पीक Bye. So in very cold regions. देखो when that water falls from the atmosphere ना it is normally in the form of water only. Surface temperature only converts that into ice. Wow. क्या है? सही तो बोला हर चीज में ना मैं कुछ जैसे बोला ना सर वही बोला सर मैंने वही बोला. As he was saying poles, if the surface temperature is -5, like example. When the water temperature coming that it is falling, but when it coming to the ground, that 2-3 molecules will join together. तो पहला जो गिरता है ना हम लोग उसको flurries बोलते हैं. What are flurries? Which are in the form of powder. I remember first winter when I see, मैं windows open करके तो ऐसा flurries गिर रहा था ऐसा दुआ की तरह. मतलब है इससे मैं थोड़ी डरता हूँ बाद में बताता हूँ. When I opened the door next morning, I could see my door was having 3 feet of ice. तो एक शॉवल रहता है वो निकाल के करने के बाद ये मैं दरवाजे से बाहर रखने काय का पना रोज आइस को क्लीनिंग करता हूं. And if you leave the car for half an hour to 1 hour, the car will be covered with the ice. नहीं बंद नहीं होता वो चालू होता है वो रशिया जैसा प्लेस नहीं. But you have to clean it with the iron brush. फिर मेरा जो मेरा फ्रेंड था he was from German and he was there only working with me. तो बोलता Alex come let it start. और बट इंजन एक है कि वो स्टार्ट हो जाता था. इधर हमारा इंजन को थोड़ा आगे से या पीछे से थोड़ा धक्का लगेगा ना खत्म. Indian made car sir ICSE. And he will run the car. I still remember at close to 280 to 300 ms miles per second. मुझे तो टेंशन आता था. सर क्या बुगाटी थी क्या? And I'll try to open the power windows and that wind will blast it in such a way ना तब मालूम पड़ता है कि कार इतना स्पीड से जा रहा है. वरना तो वार्मर चालू रहता है आराम से बैठा रहता है. जर्मनी में स्पीड लिमिट नहीं है ना. हाईवे नहीं है. But there are certain highways where you can. बढ़ाओ इतनी बढ़ानी है फिर ऐसे. So we always believe what is the surface temperature that will help the molecule to change into either snow or ice or क्या है hail or hailstone. So believe when it is falling from the atmosphere it is in the form of water droplets only. What is hailstone? Bigger than the hail, which can break your head also. वो बर्फ जैसे है इंडिया में hailstone नहीं. टच में लिखता है सर. टच में लिखता है. टच नहीं है भाई. सर होता है. ये कंडक्टर से कैसे टच जाने का नहीं भाई इधर ये नहीं जाने का वही जगह पर जा. तो होता है सर इतने मामले. हेलो टच में टच में. Yeah, please read. Yeah, During condensation, the latent heat locked in water vapor is released back into the atmosphere. Read seriously. Condensation can take place only when water vapor is added to saturated air or when the temperature falls below the temperature at which air becomes saturated. For example, at 25 degrees Celsius,
Temperature. Air can hold 30 grams of water vapor per cubic meter. If the temperature falls to 20 degrees Celsius, it can only hold 24. It can hold only 24 grams of water vapor. देखो now based on the temperature, based on the air, they are telling you exact. तो ये सब कैसे हवा में क्या रहेगा? और they might have done some experiment. Experimentally, sir. And they have done it in such a way they are telling कि ये air कितना carry करेगा, वो air कितना carry करेगा. आगे. So are they studying absolute humidity? Are they studying Relative, relative? relative. They are studying relative. We Very compare good. किया था. Compare कर. Good. Go ahead. Oh boy. The remaining 6 grams of water vapor will get condensed. Condensation takes place when the following atmospheric conditions exist. Congestion है क्या? Condensation. फिर congestion क्यों बोल? हाँ ठीक. First point, there should be a high amount of water vapor present in the atmosphere. Underline that word. High amount of water vapor. ये पहला condition है. Second. Minuscule particles of dust, sorry. ओए, it's minuscule. ये minuscule क्या है? Minuscule आप particles उधर of लिखो dust. minute. Actually अगर वो word ही difficult है pronounce के लिए. I'll take it from you. Dust, salt and even underline smooth acts as condensation nuclei. Now let me explain this word nuclei. Look at it. I mean, I'm saying water vapor present, present. But I say ये इसके ऊपर ऐसा है. So what is this part is called as nuclei, जिसके ऊपर वो बन रहा है ना? And more than 2 nuclei come together bigger, and slowly it falls. And normally I think 2 days before I was explaining 10th ICSE, I was telling them cloud seeding is done in India for the first time. Anybody knows? Clouds? You know what is cloud seeding? Dubai में sir. इंडिया में कर रहा, दिल्ली में हुआ है. दिल्ली में 2 दिन पहले हुआ है. नहीं इंडिया, मुंबई में नहीं, दिल्ली में. Because दिल्ली is chopper के थ्रू है ना. There are 3 chemicals. भाई, science भाई बोल. अब तो बहुत कुछ भी नहीं बोला तो क्या कुछ नहीं बोला वो तो बोल दे. Through a chopper there are 3 chemicals. I'll show you one of the videos where existing cloud में they spray that chemicals. And that chemicals has the tendency to bring down that molecules. जब molecules बड़ा होता है, एक हफ्ते में या 4-5 दिन में बारिश होगा. अभी ये दिल्ली में first time हुआ है. Because last time India was requesting from China, because China only brings all this for नया formula. And China और India का तब relations अच्छा नहीं था. Now you know दिल्ली से अभी China के लिए direct flight start होगी. So China has given that technology and Delhi everybody knows. अभी winter आते ही पूरा fog से पूरा भरा रहता है. So now they are trying out in Delhi. You remember 2 years before why Dubai was in floods? Because ये लोग ने जरूरत से ज़्यादा cloud seeding कर दिया. अभी उसके पास इतना पैसा है, वो American president बोलता है जिस कमोड में हम बैठती वो सोना का कमोड है. तो बिल क्लिंटन बोलता है, oh really? Then I will export it to America. वो उधर ही मैं रोज सुबह बैठा रहता हूँ. And they are true. Whatever American car is exposed in America, the next day it comes to Dubai. Dubai is the hub. And you see big cities, I have not gone. They say any traffic signal, you can see at least more than 10 to 15 supercars in that line only. Dubai, sir. ना दुबई हो ना और क्या? It is the rich. And फिर सबसे ज़्यादा फाइन उधर ही मारते हैं. इतना स्पीड हो गया फिर इतना हो गाड़ी क्लीन गया. होगी तभी फाइन इसका भी मारते फाइन हैं. है. उनका फाइन मारने का सिस्टम पूरा सर. तो फिर क्या है? सिग्नल पे कैमरा पुलिस वाले फ्लैश से मारते पुलिस हैं. आते हैं सर. सर पुलिस वाले आप से अगर पुलिस- रेड लाइट के वक्त अगर लाइन क्रॉस करोगे सीधा फ्लैश करोगे इतना जोर का आंखें बंद हो जाते हैं. And then फिर क्या करेगा? Where have to pay the fine? सर वो आपके ये सिस्टम में आ जाता है. हाँ, system. ऑनलाइन सिस्टम में तब का मतलब कॉल आता है मैसेज का. So let us finish up this. I'm reading this. Next lecture we'll show the video also. Then next look at that. The temperature of the air must be underlined below dew point to encourage condensation. Now who can tell me the meaning of the dew point? So it is Sir, the what space whatever where the Sir, air turns into water. You say. sir, whatever condensing on and fall down. Early morning जब आप glass में चलते हैं, that is गीला dew. गीला होता है. That is dew. That is not humidity air कुछ नहीं. Because the temperature which is very close to the ground, where that जो vapor है ना suddenly पानी में convert होता है. Let us go to that second last page where we have the question answers. Tick कर लो अभी. I hope we can finish this chapter in the next lecture. Take the first one. Just ask. It's okay. I'll give.
What is the instrument used for measuring humidity? आप सिर्फ hygrometer और wet and bulb लिखो. कहाँ पर है? 176. worksheet. Then how is humidity measured? Ticket. अभी ये precipitation में नहीं किया. Hygrometer. हाँ. Hydro नहीं. Hydro. Hydro बोल. ठीक है. Then ठीक है. This Practical match video. देखी? नहीं मैंने नहीं देखा. Today morning only before going college. सर ब्रेक के बाद देखते हैं ना. क्या हो गया? तुम लोग तो मैंने सुना लाइव गए स्टेडियम में. हाँ जी गया था. असल मैं गया था. तो फिर क्यों टीवी में देख रहे? हाँ? टीवी में क्यों देख रहे? सर मैच दिखी नहीं ऊपर. how much was the ticket cost? 100 रुपए. ज़्यादा कम नहीं था। बस. And where did you? अच्छा spot मिला? नहीं नहीं सर वो ऊपर वाला सर वो. Then how much did this South African team make? ना ना इंडिया ने पहले बैठा है. हाँ और कुछ चीज करना था. 299 का टारगेट था वो लोग ने कुछ तो 246. All out to 50 overs का win. match. All out to win. So this is the first time I think India has won the match. इंडिया won the World Cup. Final. Women's, वो भी women's. हाँ. सर ये पहला फाइनल था जिसमें ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में थी. One of the every medal they are this. वही सर. Men's की सर ऑस्ट्रेलिया 7 जीते. बार ऑस्ट्रेलिया जीते, 2 बार इंग्लैंड और 1 बार न्यूजीलैंड. पहली बार इंडिया जीती. Men's का पता है। Men's का भाई. Sir. Let's hope for the best. चलो, you have your break and then we'll have it. Yes, sir. Thank you sir.